This railway network is so old and so unique that it has been included in the World Heritage List of UNESCO. And for 110 years it has been bringing passengers from the plains of Himachal up to its capital at a height of 2,000 plus meters. Covering a distance of 96 kilometers, this train takes you through some of the best looking sites of the lower Himalayas, better known as the Shivalik Hills. The Kalka-Shimla railways were set up under the British for the express purpose of connecting capital Delhi to the British summer capital of Shimla. Today the train is a great way of travelling to the hills without getting stuck in traffic jams. Although the train journey is longer than a road trip to Shimla, I can assure you that there's really no substitute for the kind of sights and sounds this mini train can take you through. The toy train is one of Himachal's many tourist-friendly features. And this time I'm taking it to get to my latest episode of the FAIRS of India. Traveling through the wonderful woods of Himachal, I'm headed to a place called Arki, which is located in the lower Shivaliks in the erstwhile kingdom of Baghal. Baghal was once the headquarters of the Bagh or the snow leopard. And I'm going there for a fair that celebrates raw animal power and undiluted male aggression. This Mela is held in the middle of September, specifically on the day of the Ashwin Sankranti, or when the sun moves into the sign of Virgo. It's a time when the crop is ripe and is all set for harvest. So in a sense, Sair Mela celebrates not just the change of seasons, but it's also a time of thanksgiving and hope for the rest of the year. But as a fair, it's not very clear to me why it's called Sair, because the name really doesn't mean anything, or at least anything I'm familiar with. To find out how the Mela got its name, I did a sort of random survey of the people who had come to be part of the Mela. Now, usually a Mela is named after a place or it's describing the highlight of the activity that's going to take place in the Mela. But Sair Mela is a bit intriguing because there's no place known as Sair, and neither does Sair mean some activity that's going to take place. So I'm going to ask a few people here what exactly Sair means. ये सैर मेला जो हो रहा है यहाँ पे, सैर से क्या मतलब है? सैर मेला ये सदियों पुराना मेला है। ये सदियों से ये प्रथा चली आई है कि पहले यहाँ पर बलि दी जाती थी राजाओं के टाइम से जी, परंतु अब लेकिन जो सैर नाम है उस नाम से क्या मतलब है, अर्थ क्या है उसका? ऐसा ये बुजुर्गों को ही पता है, हमें नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। सायर जो है, सायर जो हमारे कहा जाता है, ये सायर मेला हमारी जो फसल पैदा होती है उस ये जो आज का दिन है सायर संक्रांत जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में, संक्रांत के दिन हमारी फसल जो उगाई जाती है उससे काली माँ की पूजा की जाती है। ओके। और सदियों पुरानी ये बात ठीक है कि सदियों लेकिन सैर शब्द का अर्थ क्या है? सायर ये काली की पूजा करने पर ही सायर काम। ओके ओके। सायर, सायर का मतलब क्या हुआ? सायर एक्चुअली बोलते हैं सजी। सजी समझते हैं आप? महीने का पहले दिन सजी कहते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे सारे शायद इंडिया में सारे ही सजी कहते हैं इसको। ओके। मासिक त्यौहार होता है, जैसे फर्स्ट आता है ना हिंदू में त्यौहार का, इसको बोलते हैं पहली हर मंथ की जो हिंदू त्यौहार की पहली आती है उस दिन सैर होती है उसकी, ये महासैर गिनी जाती है। ओके ओके, थैंक यू। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। थैंक यू। जो शायरी बोलता है उसको शायर बोलते हैं। जो शेर बोलता है, हाँ हाँ, उसको शायर बोलते हैं। तो यहाँ शेर और शायरी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये पता नहीं ये नाम क्यों रखा गया है इसका। अच्छा। सायर का मीनिंग मतलब मतलब हाँ ये मेला सही है, हाँ ठीक है, हाँ
ठीक है जी। नहीं तो सायर शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। साहिर नाम रखा हुआ ये जैसे आम मेलों के नाम होते हैं, इन्होंने ऐसे साहिर फेयर रख दिया हुआ। साहिर शब्द का तो हमने कभी नहीं सुना। नहीं सुना, नहीं हमने पुष्टि भी नहीं की कभी, पर अब करेंगे। अच्छा, थैंक यू। सायर, ये मेला है ना, सायर मेला, सायर का अर्थ क्या है? नहीं पता। बस यही है कि मेला होता है, मतलब जैसे हर एक जगह का अपना। हमारा तो यही अब हम मानते हैं इसी का कि ये नए साल की जो फसल आती है उसको हम यहाँ देवते के पास चलाते हैं, उसके नाम से हम सायर पे मनाते हैं। अच्छा, जैसे लोहड़ी हुई, दिवाली हुई, इस तरह का ये एक सायर मेला है। बरसात में, बहुत बरसात में लोग बड़ा नुकसान होता था, कई लोग कहीं पानी में बह जाते थे और कहीं घास इधर बहुत, मतलब ये भयानक होती थी बरसात। तो उसके बाद बरसात चले जाने के बाद ये संक्रांत जो आती है, सायर हम इसको कहते हैं, और फिर ये हंसी खुशी का मतलब एक माहौल होता है। सब रिश्तेदार इकट्ठे होके, हमारे अखरोट होते हैं, अखरोट इकट्ठे करके फिर एक दूसरे को उनको बांटते और गले लगाते हैं, क्योंकि भाई खुशी, भाई बरसात अब निकल गई, अब जो है हमारे को कोई खतरा नहीं है। किसी और से पूछो, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में सर, मैं नहीं बता सकता। As you can see, I didn't have much luck with a really solid definition of the Sair Mela. But that's how things are in India. We like to take a broad and multiple view of things, where one thing can have many multiple meanings. This can be a trifle confusing, but it's never a drain on the fun and the excitement. This year, Himachal's new Chief Minister was the guest of honour. Veerbhadra Singh has a unique position among the present crop of Chief Ministers, as this is his 6th term as CM of Himachal. In terms of experience, this means he is in his 26th year as Chief Minister, which is actually closer to the average age of those who come to the Mela. It all begins with a puja at the red-domed Kali Mandir. Kali, in fact, is the patron deity of the Sair fair, as it is in her honour that the Mela takes place every year. बसना पहाड़रा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़रा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़रा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़रा चंगा मेरे मित्रा. Traditionally, Sair Mela is a village fair, but it retains many aspects of the old world, and it does so without any apologies. Every single person of the village is involved in the Mela in some way or the other. It is especially an exciting time for school children who put in hours and hours of daily practice for their performance before the chief guest. The town of Arki is also known for its palace, which was completed in 1805 by the then ruler of the Baghal kingdom, Rana
Prithvi Singh. The fair is closely related to the palace as the Ranas of Baghal were great patrons of this annual event. According to one legend, once when the buffalo fighting was stopped, the whole village was plagued by nightmares, especially the king's household, who used to wake up in the middle of the night, fallen off their beds. So it was surmised that this was happening because the goddess was angry at the buffalo fighting having been stopped. Thus it was decided to resume the buffalo fighting once again, and when it was resumed, peace and tranquility returned once again to the village of Arki. Sair Mela is also known as Jhoto Ka Mela, where Jhoto in the local dialect means buffalo. Every year, the fair venue witnesses a show of strength of, yes, you guessed it right, male buffaloes. This show of strength is as ancient as it is quixotic. There are many stories about why the male water buffalo is such an important part of the Sair Mela. One of them is that the buffalo is a symbol of Mahishasura, the demon who had terrorized the world and who was finally slayed by the goddess Shakti in one of her many avatars. The Indian Murra buffalo is known for its strength and willingness to act as a beast of burden. Although it's an animal that is slow to anger, one wouldn't want to cross its path when it's showing signs of aggression. The male buffalo is not so much known for its aggression, but when it comes here, it is face to face with a lot of other male buffaloes, and that sort of gets it more aggressive and into the mood of the fighting. I have here with me Mr. Ashok. Ashok जी, आप इसको कहाँ से लेके आए हैं? ये सर शिमला से लाया मैं। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम शेरू है जी। शेरू? हाँ जी। तो शेरू को क्या खिलाते हैं आप? सर मैं इसको घी खिलाता हूँ और दाना खिलाता हूँ, काले चने। कितना दिन पहले? सर ये तो 30 दिन है, डेली का। अच्छा, डेली का। तो शेरू की क्या खासियत है, अगर आप हमें बताएं कि शेरू का? सर हमने इसके लिए वैरायटी के लिए रखा हुआ, नस्ल के लिए। हाँ। नस्ल के लिए रखा हुआ, यहाँ तो ऐसे लाया प्रदर्शनी के लिए इसको। अच्छा। अपनी शौक से पाला हुआ हमने, ऐसा कुछ नहीं, प्रदर्शनी के लिए लाया हुआ है। कितनी उम्र है शेरू की? इसकी उम्र है सर कोई 13 साल। 13 साल का है ये? हाँ जी। और इसकी खासियत क्या है, ये कैसे आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसके टेम्परामेंट को? इसको तो मेरे को पता है ना, बचपन से रखा सर मैंने इसको। मैं और तो देख के ही भाग जाएंगे, क्योंकि इसका काफी बड़ा शरीर है। मेरे को पता है इसको कैसे रोकना है इसको। कैसे? मैं तो रोक लेता हूँ, आगे जाके इसकी ज्यादा ही बिगड़ जाए तो ये मारना इसके, फिर रुक जाएगा ये। ओके, कितना वेट होगा करीब इसका? कम से कम 700-800 किलो। 700-800 किलो? हाँ जी। वाह, और लेके कैसे आए इसको? इसको सर मैं पिकअप में लाया गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में पीछे आराम से बैठ जाता है? हाँ जी, सो भी जाता है, खड़ा हो जाता है जब मर्जी जाती है। The buffalo contest is the highlight of the Sair Mela. It is believed that bad planetary aspects are removed if you see these two creatures having a go at each other. This curious belief is said to be related to the fact that the water buffalo is the vehicle of Yamraj, or the god of death. And so, watching two inauspicious creatures fighting actually turns out to be quite a lucky thing. But for many younger people, the adrenaline rush of watching a live event like this actually equals many hours of surfing channels on TV. The best thing about watching a mela from on top of a tree is that you get an absolutely unobstructed view of what's happening down below. Of course, there are a few branches on the way, but that doesn't really stop people from climbing up. In the early days, the buffalo contest used to be a very serious and severe event. Locals tell me the fight used to only stop when one of the males drew blood. In even earlier times, there was a tradition of sacrificing male buffaloes to the goddess in order to keep her in good humor. Today, the buffalo contest is something that is carried out more for the fun of it. I'm told that in all the years it has been going on, there have been no instances of either the public
or the animal getting injured badly. The most surprising thing over here were the people. They seemed to be actually very zen about it. They had no qualms, no worries about facing a 500 kg or a 700 kg bull in action running towards them. They were really fleet-footed and very fast in escaping and getting out of the path of the angry bull. One has seen bulls running amok in Spain. One has seen visuals of it, but here nothing of that sort happens. The bull is actually enclosed in a fenced arena. It's a very organic way of entertainment where two male buffaloes are brought face to face, and their internal aggression, their very natural aggression is unleashed, and it also becomes a spectacle for the people who come here from great distances to watch this amazing event. When I spoke to the trainers, they told me they gave them a very special diet, at least for a month before the actual fight. They gave them ghee, which is like clarified butter, and a diet of chana and vegetables and paneer and gur. So this kind of makes the animal nice and strong and supple to take on this one fight that happens once in a year. Melas across India are in many ways similar, where on the one hand they supply an annual dose of fun and entertainment to the locals, they also have an economic angle for many small and medium traders who are able to sell their stuff without having to set up a permanent shop. But if you think small traders always think small, you're in for a big surprise. Like this gentleman who tried selling me an air gun. It's not your usual Mela fare, but who am I to judge? The economic rewards for the visiting salesman may be good, but the local traders aren't always happy. Hiralal owns the oldest shop of Arki. His ancestors set up this shop when the place was just a little more than a one-horse town. Today the shop is more like a supermarket where everything from daily needs to big agricultural implements can be bought. अच्छा कल मेले में हमने देखा था गाय भैंस को ना जी। ये बताइए यहाँ के व्यापारियों को मेले से क्या फायदा होता है? क्या यहाँ का जो इकोनॉमी है उसमें कुछ पैसा आता है मेला होने से? नहीं, इकोनॉमी में तो हमारे को कोई फायदा नहीं होता, हमारा तो नुकसान ही होता है। अच्छा। लोकल जो व्यापारी होते हैं, क्योंकि बाहर से जब व्यापारी आते हैं तो हम जैसे यहाँ पे बैठे होते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो रोज ही होते हैं, चलो बाहर से आए इनसे कुछ चीज़ ले लेते हैं, जबकि वो सारा सामान हमारे पास शॉप्स में अवेलेबल होता है यहाँ पे। और कुछ बात जो मुझे समझ नहीं आती है मेले की, वो ये है लोग सामान को ऐसे पढ़ते हैं मेले में जैसे हमारे पास सामान ही नहीं मिलता है मार्केट में। ये इतना सामान बेच जाएंगे, 5-6 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन का मेला होता है लेकिन 5-6 दिन रहेंगे, जितना हम पूरा साल में नहीं बेचते। एक ये चीज़ है, ये वही आइटम है, हमारे को दुकानदारों को तो कोई फायदा नहीं मिलता है इसमें। क्यों? ये तो बस ये जो सीजन लगाने हैं इन्हीं का फायदा है, हमारा तो कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास वही रेगुलर कस्टमर आएंगे जो आएंगे। लेकिन जो मेले को देखने आते हैं खास वो भी तो आ जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं आगे के लिए। ऐसे बंदे आते हैं कि देखने ही आते हैं सिर्फ अपने, फिर आगे के लिए कस्टमर तैयार हो जाता है फ्यूचर के लिए। तो फायदा तो है, फायदा तो है, ये नुकसान तो कुछ नहीं है, बस ये फायदा है। Himachal Pradesh is known as Devbhumi, or the abode of gods. This is because across the mountains and valleys of Himachal are scattered thousands of temples and shrines dedicated to an equal number of gods, goddesses and village deities. Lutru Mahadev is the highest point of Arki, and it affords a striking 360 view of the area. It is a cave temple that can be reached after climbing more than 100 steps. It is believed that Shiva appeared in the dream of the king and told him to build this temple. I'm sure the task of building a shrine inside a mountain peak must have definitely overwhelmed the king.
भवम इदं स्तोत्रं पठित्वा तुम महास्तोत्र पठेन सासु सत्संग नमाप्नोति समदाम ओम इति देव्याग्ला स्तोत्रं समतमें जपेन ओम नमः चंडिका मार्कंडेवाद. Mutru Mahadev is the exact opposite of the Lutru temple. Where the former is reached by climbing up, this one can be accessed by climbing a few hundred steps down. There are about 10,000 small and big temples and shrines spread across the small state. Many of them are associated with the Pandavanic legend or the story in the Mahabharata about the 5 Pandav brothers. There are others which are associated with the Shaivite faith where Shiva or Mahadev is the main deity. This here is called Mutru Mahadev, a temple dedicated to Shiva and is made out of a natural cave where stalactites deposit calcium one after the other in small drops, forming some amazing structures which we see inside the cave here. यहाँ का नाम जो है मुटरू महादेव पड़ा है ना, ये पानी का बूंद बूंद गिरना संस्कृत नाम है मुटना. 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 ओके, इसलिए मुटरू महादेव नाम से चला. कि यहाँ पे पानी लगातार बूंद बूंद गिरने का माना है. ओके. ओके. कैल्शियम ही जमी हुई है ये सारी चीजें, यही जो आकृति बन रही है, इसी का जो है आकृति बन रही लिंग के रूप में. अच्छा. हाँ. लेकिन कितना पुराना है ये, इसका कोई अनुमान है? अजी पुराना कहा जा तो हम तो इतना ही कहें कि जब से प्रकृति बनी होगी तब से हुई होगी. आज जब से यहाँ मानव का बसना शुरू हुआ होगा, मानव यहाँ बसे होंगे, राजे रजवाड़े बसे होंगे, तब से जो है इसको खोज हुई होगी. Another highlight of Sair Mela is also a hormone-fueled sport, the sport of Kushti or Indian-style wrestling. Behind me is a much looked forward to event of the Sair Mela, which is the wrestling match which is about to begin, where wrestlers from all over North India, especially UP, Haryana and Punjab, come here to try their hand at the wrestling pit known as the Dangal. Kushti matches attract wrestlers from neighbouring states who come here both for the reward and the acclaim Sair Mela has earned for itself over the years. In sporting terms, this is probably one of the grand slams of Dangal Kushti or mud wrestling. Kushti is one of the most ancient and most favoured of sports in India that go back to the time of the epics. In the Mahabharata and the Ramayana, there are both mentions of some great wrestlers, Gadadhari Bhim being one of them and Hanuman being the other. Mahavir Singh is both referee and judge of the Sair Kushti events. पुराने टाइम में ना ये एंटरटेनमेंट का साधन कुछ नहीं था. लोग अपने रोज़मर्रा की से जब भी फुर्सत मिलती थी, फुर्सत के क्षणों में एंटरटेनमेंट का ही था. प्लस हर एक गांव के अपने पहलवान होते थे राजा महाराजाओं के टाइम. तो जिस गांव का तगड़ा पहलवान होता था उनको उसकी प्रिविलेजेस दी जाती थी. पहलवानी की जो परंपरा है आज भी कायम है, आज भी लोग करते हैं कि बहुत कम होती जा रही है? नहीं, थोड़ी फैसिलिटीज जहाँ गांव के लिहाज से कम है, लेकिन सरकार काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है. इस मेले में जो आते हैं पहलवान कहाँ से आते हैं? ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश. कुछ खास रूल्स हैं, अलग रूल्स हैं? यस यस, वी फॉलो ईच एंड एवरी रूल ऑफ रेसलिंग. ओके, क्या है सबसे, व्हाट इज द मेन रूल? अपने जैसे मिट्टी के खाड़े की जो कुश्ती है ना जी, उनके अलग रूल हैं. मैट पे खेली जाती है. हम मिट्टी का यहाँ जो मिट्टी खाड़े वाली कुश्ती के जो रूल है वही ऑब्जर्व. तो हार और जीत में क्या फर्क है? अगर किसी को कुश्ती के बारे में कुछ नहीं पता तो कैसे समझा जाए? वो तो बाई फॉल, अगर ऊपर पीठ लगी ना जी, मीन्स आपकी चेस्ट ऊपर आसमान की ओर होना चाहिए, फेस टुवर्ड्स स्काई, फिर बाई फॉल होगा.
अदरवाइज पॉइंटों पे भी करा। और कितने राउंड होते हैं? राउंड का नहीं है जी, समय निर्धारित करते हैं। As a sport, Indian Kushti gets its name from Persia, where a similar version is known as Varzish Kushti. But the Indian grappling tradition goes back to ancient times, when it was called Malla Yuddha, as is mentioned in the Malla Purana. Open challenge. Oh, okay. Pumped up by the wrestling, I decide to try my hand at something that's less physically demanding, but is somewhat closely related. Okay. Incidentally, it's also something in which my best is yet to come. Ready. Yes, done. Thank you. Congratulations.